Assalamualaikum. I'm Aman Faz and welcome back to 𝒓𝒐. We're back this time with a very special episode with my beautiful ladies from DSG family. So first of all, a very happy Women's Day to all the people watching. हर साल 8 मार्च को Women's Day celebrate किया जाता है to specifically celebrate women, उनकी achievements को, how the efforts they put in this world. So this time we decided कि this Women's Day हम लोग पूरा साल 𝒓𝒐 के सब sessions करते हैं. We invite people from all walks of life. लेकिन इस दफ़ा हमने decide किया कि why don't we celebrate ourselves on this Women's Day. So DSG family में हमारे साथ जितनी भी females हैं, we all put in our 100% to make the vision of the company work, and that's why we decided कि this time हम लोग ने जो topic रखा है साल का, that is that it's easier to celebrate women than to be one. So why don't we celebrate ourselves? So thank you so much, ladies, for joining me today. So before we hop into the conversation, it will be a very casual chit chat about our journeys, किस तरह हम लोग साथ मिलके काम करते हैं, how each of us make a specific portion of DSG family. So पहले मैं सबका introduction करवा दूँगी. I have with myself Ms. Nazifa Fatma. She's the CMO of DS Group. Then I have हिफ्सा को आप लोग बहुत देखते रहते हैं 𝒓𝒐 पे. आज हिफ्सा नहीं बोलेंगी ज़्यादा, मैंने पहले कह दिया. So Hifza is the assistant manager BD. Then we have Sabahat with us, who is the assistant manager HR. So we have a new member of the family also with us, and that's Ms. Khan. She is an intern in the sales department. And you guys know me. Generally वैसे हम जब भी women empowerment की बात की जाती है, Women's Day पे बात की जाती है, तो बहुत बेचारा शो किया जाता है औरतों को. हालांकि जनरली इतने भी बेचारे नहीं हैं हम सब. So अब हम कोशिश करेंगे कि we'll talk about all the good things in life, how different people add up to our life. So we'll talk about different patterns of how our journey started at DSG. So I'll ask you, Nazifa, since you are the very first one here, since the very inception of DS Group. Yes. So how has this journey been of all these years? How it started? क्या obstacles are? If you can sum it down for us. Obstacles definitely आते हैं because unfortunately हम एशिया की एक ऐसे कंट्री में है जहाँ नो डाउट प्रॉब्लम्स होती हैं. लेकिन अगेन जैसे हमने अभी बात की कि हम इतना बेचारापन भी नहीं होता, बहुत सारी जो है वो आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं. और वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरे साथ भी हुआ बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन ब्रेक मैंने अपना करियर जो है वो दोबारा स्टार्ट किया. उस टाइम पे मुश्किल लगता था. उस टाइम पे एक्चुअली आई वाज फ्राइटेंड एज वेल बिकॉज ऑब्वियसली मेरे बच्चे जो थे वो बहुत छोटे थे और एक माँ के लिए जो है वो बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है टू चूज बिटवीन अ करियर एंड देयर किड्स. देन अगेन ऑब्वियसली माय हस्बैंड बिकॉज ही इज नॉट दैट स्टीरियोटिपिकल हस्बैंड. सो ऐसा भी टाइम होता है कि जब आपके पास बहुत लेट नाइटर्स आपको लगाने पड़ते हैं, आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है, एट टाइम्स किड्स को मैनेज करना पड़ता है. तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी वर्किंग होती है जो डेफिनेटली आपके पास सपोर्ट अवेलेबल हो तो ही ये सारा काम होता है. एंड आई थिंक सेम गोज फॉर एवरीवन. हाँ, ऐसे भी बहुत सारी अभी तक फैमिलीज और वर्किंग और ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनके पास शायद अभी उतनी अपॉर्चुनिटी और उतनी सपोर्ट नहीं है. बट स्टिल टाइम जो है वो चेंज हो रहा है डेफिनेटली एंड लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आ रही है. एंड आई थिंक दिस वुमेन्स डे हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट वी नो दैट व्हाट आवर राइट्स आर एंड एटलीस्ट वी नो दैट हाउ वी शुड स्पेंड आवर लाइफ. एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड. तो नज़ीफा की जर्नी की अगर बात की जाए तो आई थिंक मैं बहुत क्लोजली आई वर्क विद नज़ीफा फॉर 2.5 years आई गेस नाउ. सो अगर वुमेन इन वर्क प्लेस की हम लोग बात करें स्पेसिफिकली तो आई थिंक देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ इट कि ऑल द वुमेन हैव समथिंग इन देमसेल्व्स व्हिच इज वेरी यूनिक अबाउट देम. फॉर एग्जांपल हमारे अंदर वो एक नेचुरल पैटर्न होता है, कोई माँ वाला, कोई बहन वाला, कोई बेटी वाला, which translates and makes the family. So अगर नज़ीफा की बात करें so I think this time she also got the Parent of the Year award. I got that and it is quite justified because I am that kind of a person ना जिसको मतलब मुझे ये आदत है कि I want everyone to be around. मुझे होता है कि कोई एक एक्टिविटी हो रही है चाहे वो ऑफिस में है चाहे वो घर में है तो each and every member that is present there तो वो उसका हिस्सा हो. और अगर वो नहीं होता तो मुझे एक्चुअली ना खुजली होती थी क्यों नहीं है और वो प्रॉब्लम है क्या है. सो येस दैट इज द काइंड ऑफ नेचर दैट आई हैव. बट आई थिंक एट द सेम टाइम वो अच्छी इस तरह से है कि वी एंडेड अप building a DSG family here.
सो ये वाली एग्जैक्टली। और इसी तरह फिर फैमिली में सारी चीजें मैनेज करने की बात करें तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल एचआर का रहता है। हर खबर पे नजर। So it's about how has it been since HR is the kind of field जिसमें आपकी interaction बहुत ज़्यादा होती है, and I'll put it out there कि पाकिस्तान में there are every kind of people. So not being a woman, it's not like interacting with every kind of man is same. Every category is there. So how is it been? I would say कि it is a fun, sort of fun. मतलब आप उसका regret कर रहे होते हो, लेकिन after a while आपके पास एक story आ जाती है to tell everyone के भी ये हुआ है. It's all fun and games until someone calls it. तो basically I would say कि HR जो है काफी fun work है. You get to meet a lot of people. आपकी अपनी DSG फैमिली के अलावा भी बहुत ज़्यादा लोगों को मिलना का चांस मिलता है हमें. हम उनको देखते हैं, हम और हर किसी पे नजर होती है HR की कि किसी ना किसी तरीके से कौन आपको अच्छा पर्सन मिले जिससे आप ऐड ऑन करवा सकें. तो अपनी फैमिली की वैल्यूज देखते हुए आप अगले पर्सन को देख रहे होते हैं. अब तो HR में माशाल्लाह काफी ज्यादा फीमेल का नंबर है, अच्छा खासा कोटा आ गया हुआ है. मतलब ये है ना, I think it's also because females have this quality of like bonding everyone together. हाँ तो वो उसी पे जाते हैं, इसीलिए मैं Exactly, इस बात से पहले मैं ही HR But I must appreciate the role of HR because जहाँ yes I'm being a little bit biased कि ख़वातीन इसको ज़्यादा अच्छा निभा सकती हैं because सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुख्तलिफ मिजाज के जो है वो मर्द हज़रात होते हैं, ख़वातीन भी बहुत अलग मिजाज के होते हैं. हमारे पास हिज्जा भी है और हमारे पास मुस्कान भी है जो बोलती नहीं है तो जिनकी समझ ही ना आए, ठीक है. तो उसमें वर्किंग ये है कि हर बंदे को उसके टेम्परामेंट के हिसाब से डील करना और फिर ऑब्वियसली इस तरह से डील करना कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप किसी को नाराज भी नहीं कर सकते, ठीक है. तो दैट इज अ वेरी गुड वर्क दैट सबाहत ये बहुत डिप्लोमेटिक पोजीशन होती है ना. एग्जैक्टली. You have to keep everyone happy. और बैक में जाए आप बैक में चलाई हो. Exactly. जैसे I'm sure कि कल जब हम Women's Day celebrate करेंगे तो some men will stand up and say Men's Day तो नहीं celebrate किया. लेकिन हमने आपको कवर करने के लिए हाँ वैसे हमने तो फिर वो पिछली दफा भी जब वो क्वेश्चन राइज हुआ था तो पीछे से निकाल के वो फुटेज दिखाई गई थी कि वी सेलिब्रेटेड दिस. सो एक और बात जब भी की जाए आई थिंक इफ आई हैड $1 फॉर एवरी टाइम मैंने सीख में इस चीज की बात की हो कि एक बहुत बड़ा बायस हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है व्हिच इज दिस डॉक्टर इंजीनियर टाइप. और उसमें इंजीनियर का जो आई पर्सनली विल शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आई वेंट इनटू प्री इंजीनियरिंग. हाउएवर I had no link with that only because I wanted to defy this कि भाई you can't go into engineering. So वो तो जब engineering में जाने का time आया तो I realized that I did this out of just and luckily you came to DSG and then we explored that Aman engineering is not for you. Exactly. So then she obviously decided and she didn't do that. बिल्कुल. So ये जो engineer bias exist करता है तो बहुत I really appreciate the women who just take up to this. और जो engineer हैं अभी भी पाकिस्तान की society में so we have 3 with us. Just because I am CMO it doesn't mean I am not an engineer. We have 3 of them with us, but I will ask this question specifically to Hifza and Muskan. How has it been with you guys being engineers since you purely work in the field and आपका एक नया भी experience है and you're freshly passed out, so आप ज़्यादा better बता सकती हो. तो मुस्कान, how has it been for you और कैसे सोचा engineering करने का? स्पीकिंग पहले तो ये कहा जाता था कि आपने एक बच्चा जब पैदा होता है बड़ा होता है तो उसकी डेवलपमेंट की जाती है लाइक यू हैव टू बी डॉक्टर और इंजीनियर, ये 2 कैटेगराइज की जाती हैं. सो अगर ऑनेस्ट हूँ तो मैं कहूँगी कि मैं स्टार्ट में बिल्कुल यही था कि आई वाज लाइकिंग, मुझे पेंटिंग बहुत पसंद थी और मैं आर्ट्स वाली साइड बहुत ज़्यादा थी. मैं टू फॉन्ड ऑफ पर्सन ऑफ आर्ट्स. लेकिन जब आगे बढ़ते गए लेकिन फिर फ्रेंड्स ने कहा कि नहीं यू हैव टू डू द प्री इंजीनियरिंग. तो FSC स्टार्ट की प्री इंजीनियरिंग से. मामा ने कहा कि आपने मेडिकल करना है, मेरी मेट्रिक बायो में, देन FSC में प्री इंजीनियरिंग और उसके बाद मैंने आर्किटेक्चर में अप्लाई किया था. बट ड्यू टू सम फैक्ट्स गवर्नमेंट के और ब्ला 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 उनकी वजह से प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ. उसके बाद इलेक्ट्रिकल में एडमिशन हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिकल का मेरा फॉन्ट था, मुझे पसंद थी इलेक्ट्रिकल, काफ़ी चीज़ों के अंदर घुसना,
डिफरेंट चीजें देखना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, वो सारी चीजें मोबाइल चीजें खोलने वाला, उनको ठीक करने वाला बनती। तो वो सारी चीजें मुझे काफी पसंद थी। मैं सिर्फ एक चीज जानती हूँ कि लाइक अगर आपने इसको अडॉप्ट किया है इंजीनियरिंग फील्ड को, तो आपको इतना होना चाहिए कि आपने इसको अडॉप्ट किया है तो आप किसी की सीट पे आए हो, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है और इसमें बहुत कंपटीशन है। अगर आप इसके अंदर आ रहे हो तो एटलीस्ट आपको आगे जाके फील्ड में वर्क करना चाहिए। अगर आप उसमें काम नहीं करते हो, इसका मतलब ये है कि आप अपनी वो सीट ज़ाया कर रहे हो। आपने इसमें वर्किंग नहीं की है, आपने प्रैक्टिस नहीं दी है, इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आप उसको नहीं करना चाहते। आपको वो चीज़ अडॉप्ट ही नहीं करनी चाहिए थी, उस फील्ड में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अगर आप वहाँ नहीं आते तो आपकी जगह पे कोई ना कोई और बच्चा आता और वो आगे आके मुल्क की प्रोग्रेस के लिए। आई थिंक इसको थोड़ा सा ये भी है कि जो एक टैबू सा है हमारी सोसाइटी में कि जी सिर्फ 2 ही प्रोफेशंस है, भाई फ्रीलांसर हमसे ज्यादा। एंड आई सो रिग्रेट कि आई एम अ मिलेनियल, तो जिस जमाने में मैं थी उस जमाने में फ्रीलांसिंग का कांसेप्ट था बट इतना बूम पे नहीं था, तो मैं तो फिर yes I did freelancing, लेकिन obviously I didn't मतलब मैंने उसको as a profession। अगर पाकिस्तानी मार्केट में आप हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन को बताने निकलोगे कि आई एम अ फ्रीलांसर, आपका अच्छा खासा घंटा लगेगा। अभी एक रिसेंट एक वीडियो भी वायरल हुई है कि एक दुल्हन बकायदा बैठ के लैपटॉप पे काम कर रही है एंड शी इज अ फ्रीलांसर, और उस पे उन्होंने सेम पॉसिबल थिंग कि गवर्नमेंट इसको एक्सपीरियंस में कंसीडर नहीं करती है। लाइक अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो वो आपकी एक्सपीरियंस कंसीडर नहीं होता है कि उसकी एजुकेशन होने की और अवेयरनेस की जरूरत वो हर लेवल पे है, लेकिन अगेन चेंज जो है वो बहुत आराम से आता है। तो आज हम हिफ्सा को भी थोड़ा सा बोल देते हैं, अभी तक काफी सजा देते हैं। So Hifsa, आप बताएं, how has it been for you being into multiple fields? Yeah, I'll start with that fact कि जब engineering में admission लिया था, तो to be very honest, this was the concept that I have one sister, so one went into the medical and I went into the engineering, and the basic idea behind that कि यार एक डॉक्टर बन जाती है और एक इंजीनियर बन जाती है। तीसरे बच्चे को सीए तो नहीं करवाया वहाँ पर? नहीं, तीसरा बच्चा went whatever he liked. Oh, luckily, yeah. तो उसमें था ये कि when I was done with my engineering, it was good that I was good in like at sciences, so it went well for me. कि engineering was the combination of everything. But after that, I worked in operations and the plant site, and I have worked in the sales department. Now I'm working in business development and marketing. I go to the fields as well. So it's like आपका exposure हर चीज में आ जाता है। Marketing में बैठ के you touch your creative side, and you have all the like the horizon is very big, and you can think about and do whatever you can think of under the sun, because when you are just talking about the technical area, then you have to be very specific about all the technicalities and parameters के साथ deal कर रहे हो वो। तो business development and marketing has been a very good experience for me, because it has apart from my academic background, it has let me explore more of my creative side as well. So it turned out well. But if I would have to do it again, I would explore more options for myself as far as the academics are concerned. So how is it hosting Seek now and seeing so many wonderful women? It's kind of liberating. You know, you get to meet new people, you get to like hear new stories, और आप हर उस स्टोरी से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो। That's the basic idea behind the Seek. So it's kind of liberating for me. Yes. That's the wonderful part of Seek. Asha, I put a very fun question here. It's like I think हम सबकी journey में everyone has a story. ठीक है? So it's all like जिस तरह हम किसी बात में कह रहे हैं कि it's easier to celebrate women than to be one. So हम सबके साथ हमें किसी ना किसी ने जिंदगी में कोई एक sentence, कोई एक line की है which stuck with us and shaped us. So what will it be? Okay, for me it is actually the wallpaper of mobile as well, because हम मेरा ख्याल है 24 में से 32 घंटे अपने मोबाइल में देते हैं। So learn to value yourself. ये चीज़ मैंने बहुत बाद में सीखी। जब हम टीनेज में होते हैं तो लाउबाली नेचर होती है, आपको एक्चुअली प्रैक्टिकलिटीज ऑफ लाइफ रियलाइज नहीं होती जब आपके पेरेंट्स आपको शायद बता भी रहे होते हैं कि ऑब्वियसली यू हैव टू बी सीरियस इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस इन वर्किंग। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शायद जिंदगी इसी का नाम है कि विद एवरी डे पासिंग यू लर्न न्यू स्टफ एंड यू लर्न न्यू थिंग, बट दिस इज द वन थिंग
that has stuck with me कि बाकी सब लोग भी important होते हैं, आपकी family, आपका work environment, everything, लेकिन आपका अपना आप भी बहुत important होता है, चाहे वो health perspective से हो, चाहे वो अपने आप के ऊपर confidence हो, चाहे वो अपने आप पे एतबार हो, ठीक है, और ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव से सो जैसे ही आप अपने आप को वैल्यू करना स्टार्ट करेंगे, आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे डे बाय डे, तो जो इर्द गिर्द के लोग हैं, एनवायरनमेंट है, वो अपने आप को खुद एडजस्ट कर लेगा। ये वही सिचुएशन है कि इफ यू आर नॉट काइंड और इफ यू आर नॉट वैल्यूइंग आवर ओन सेल्फ, सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अदर पर्सन टू वैल्यू अस। इसलिए पहले अपना ख्याल रखना और अपने आई थिंक एग्जैक्टली, और ये इसी चीज से कनेक्ट भी करता है कि जस्ट स्टॉप गिविंग दैट बेचारगी वाला एलिमेंट टू द एग्जैक्टली एग्जैक्टली इंसिडेंट्स होते हैं अनफॉर्चुनेट भी और हर तरह के, लेकिन यू हैव टू फाइट विद ऑल दोस स्टफ, और फिर उससे बाहर निकल के भी दुनिया है, यू हैव टू इवॉल्व ऑब्वियसली, ठीक है। I'll try to like prolong that conversation. The idea of a bichari woman, it's actually within yourself. Yes. You are the one who decides if you are a bichari or not. Because world is going to say, because ये एक power है ना, the sense of power and control that comes when the women consider themselves as bichari women. So it starts within you. When you try to explore yourself, वैसे तो मतलब every day you try to learn new things, intentionally or unintentionally. But there was this one thing I learned from my mother, that she told me that if anything unfortunate happens with you, or anything that's making you depressed or bringing you down, so if you are not doing anything about it, you are going down to that road intentionally, like it is your will. So that was like one of the sentences that made me realize that after Allah, every power you have, like every power exists, or every power lies within your soul. So whatever you decide, once you decide that, once the willpower exists, the opportunities make their way themselves. Opportunities bhi aate hain, and you get to do whatever you want, actually whatever you want. I won't continue to this conversation वरना हमारा बहुत environment boring हो जाएगा। I would say कि the one sentence जो कि हमेशा stick किया है, it's के I met a person जो कि शेफ था, and he said to me, सबाहत हुनर सीखो। तो That's wonderful. That's very We actually did a show on Hunar Seekhiye recently. So he told me कि सबाहत हुनर सीखो। Nobody cares कि आप कितना अच्छा फिर लेते हो, कितना अच्छा पहन लेते हो, ठीक है, हर जगह आपकी तारीफ ना आपके हुनर की होती है। बिल्कुल। तो and that was my first job and my first month, तो that वो अभी तक मेरे साथ है, and whenever I get the opportunity कि मुझे कोई नई चीज़ सीखने को मिल जाए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे सीख लूँ ताकि it add on to my हुनर। That's very nice actually. So what will it be for you? अगर मैं इन्हीं को कंटिन्यू करूँ तो फैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हुनर सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम जॉब के लिए भी आते हैं या कुछ भी करते हैं, तो अब की सोसाइटी में हमारे जीपीएस मैटर नहीं करते। क्योंकि अब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो लिटरली नो वन आस्क्ड मी माय जीपीए, कि I never did। And I am glad कि हम इस वाले वो जो एक मेंटालिटी उसे बाहर निकल आए हैं, जीपीए की वो जो एक रेस होती है ना, एक जॉब से बाहर देख के जज करती हैं। You never know। नो आइडिया, बट इंटरव्यू में मुझसे जीपीए नहीं पूछा गया था, और इट्स वाज गुड कि मैं काफी खुश हुई थी इस चीज पे कि हाँ यार मुझसे जीपीए नहीं पूछा गया, मेरी यूनिवर्सिटी का नहीं पूछा गया, मेरी स्किल्स के ऊपर, मेरी सीवी पे स्किल्स थी, जो मेरी कन्वर्सेशन हुई उनकी बेसिस पे उन्होंने मुझे यहाँ पे रखा, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पर, मैं भी अगस्त की ग्रेजुएट हूँ। सो बहुत अच्छा, बहुत लिटरली बहुत अच्छा यहाँ पर माहौल है, और बाकी सारा भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गुजरा। I think हमारी जितनी फ्रेटर्निटी अभी मैं देख रही हूँ कि उनको पता है एक डिग्री लेस बच्ची हमारे साथ 2.5 साल से, तो हुनर सीखो। This used to be like I graduated a while ago, but it is changing. But it used to be that dilemma कि हमने GPA पे बहुत ज़्यादा जोर देना है, मतलब you are not worth anything if your Exactly. GPA I is think we had a conversation on millennials versus Generation Z, and the biggest drawback being a millennial was GPA की race. GPA, And why it has to be down 3. The one is GPA and the second is the university name. I think that matters. नहीं, sometimes Those values. But there was a thing that I used to like. I realized
opposite, that when you're focusing so much on the GPA that you are not even studying, you're just like trying to be in that race. Yes. और Wait, उसमें होता bracket है है ना, ना, कितने ये University से exams And में भी अभी भी what happens after graduation? हमारा वो flex नहीं है ना भाई. So I think they're talking about वो part के degree less बची. I guess मेरी जो बात की जाए तो I started off when I was 16. Yes. ठीक है. So मेरा जहाँ पे वो turning factor था ना कि I got rejected of a job position. ठीक है. And that was the first rejection of my life. And the person literally said to me that you're very great, your CV is absolutely brilliant, but you're too young for this. And I was like, okay. So at that moment I decided that, okay, age is not going to define it. And there's also a concept which really stuck to me. It was like that, to be a queen, you have to give up on the princess mindset. Oh yeah. You have to give up on the princess mindset, and whenever people ask you, I get this question so many times. Even my own family sometimes ask me why you're doing so much. So I also read it somewhere that dust settles, queens don't. Oh my God. So that's the factor, and these are two lines which really stick to me. So I think ये छोटी छोटी बातें होती हैं which shapes up, and उसमें सबसे ज़्यादा important बात जो हमारे लिए आ जाती है, which we want to promote today, is that empowered women empower women. Definitely. Yes, that's And the that's actually one of the best things about DHG family. Exactly. The work culture here, the relationship between all the females, even with the male colleagues, it's absolutely great. ऐसा लगेगा हमने sponsor किया. Like you don't feel like your work is That's burden. technically sponsored, guys. Okay, Aman, आपने हम सबसे तो पूछ लिया the journey with DHG family and the journey with the degrees and everything. I would like to ask you as well to share with us and the audience that how has all of been with you. Acha, there's this one thing I always say, okay, the very funny thing, it's like, I grew up here. So technically I grew up here. I was 16 when I joined. So I was not even up यहाँ पे HR We'll say that you were in internship. Good. So that's the factor कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, और उसमें वही जब हम women element की बात करें ना, so I was never distinguished in any job कि either start जैसे it was never like that you're an intern so you can't do this job. I was given big responsibilities despite the fact whether you're an intern, you're young, you have a degree, you don't have that. And me and Nazifa started off when we were just the only two females that the company had, and we never felt awkward like you do in somewhere else. So it was a very fulfilling journey, learning every day, and it's more like just being with the family. So it's just one day it's like evolving, growing. So I grew up here. So that's the journey. And I think उसके अंदर यही बात है कि जिस तरह हमने ये बात की कि jobs का जो discrimination है वो नहीं होती कि if you are intern you cannot do this particular thing. तो बिल्कुल उसी तरह ये है कि ये डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है कि if you are female तो आप प्रोजेक्ट पे नहीं जा सकते, या बहुत सारे हमें ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो जल्दी DHG एनर्जी के प्लेटफॉर्म से मिलते हैं कि जी why the ratio is so less. So it is definitely not from our side, but again हमारे पास बहुत सारी फीमेल सीरीज भी आती हैं और मेल सीरीज भी आती हैं, और उसमें ऐसी बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती कि जी हम किसी एक पर्टिकुलर मेल को या किसी एक पर्टिकुलर फीमेल को हायर कर रहे होते हैं. लेकिन स्टिल ऑब्वियसली ये एक फील्ड इंजीनियरिंग की ऐसी है जिससे मुझे लगता है कि अभी भी ज़रूरत है कि ख़वातीन जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा जो है वो उसके अंदर वर्किंग करें. I think we are pretty open जब हम उनसे क्वेश्चन करते हैं. हमारा हर कंपनी का एक स्टाइल होता है रिक्रूटमेंट का, और हमारा स्टाइल होता है कि हम ओपनली पहली बार में उनसे पूछ लेते हैं कि यहाँ ये काम करने पड़ेंगे. If you are willing तो हम कंटिन्यू कर देते हैं with the interview and the further जो भी recruitment. Exactly. So I think ये फर्स्ट राउंड में they are down के नहीं जाया तो नहीं जा सकता अभी, तो हाँ जो जा सकती हैं हम उनको बिल्कुल आगे लेके जाते हैं. It's not even engineers. अगर हम marketing team की बात करें, we women have also spent days on the plants shooting that. वो इतनी गर्मी में where people are like हमारे शरीर को कुछ हो जाएगा. In June, July, we have shot those plants ourselves. अच्छा, I think to wrap it up, I'll ask the question कि start में भी हमने यही बात की कि हम हमेशा बहुत negative side की बात करते हैं जब women empowerment पे आती है
कि ये जुल्म हो गया, वो हो गया, लेकिन we don't talk about the bright side of it कि हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग होते हैं who add up to it, who stand at your back so that you can grow. So I'll just lastly ask that who has that person been for you guys? You're asking me? Yeah. Yes. Okay. Obviously the parents, but apart from that, my brother has supported me a lot, and that's actually the family. But family के बाहर जाएं तो I have a lot of supportive friends, and I think when you're working, your team has a part to play in it as well. Like if you're talking about having the back, तो जब तक आपके colleagues की, आपकी team की, they're not having your back, तो you cannot move forward. So I guess कहीं ना कहीं support मिलती रहती है. You just have to pick that one support. Like she has supported me a lot. Rizan has the sassy dance. I would say कि my father. I won't list lot of people like him. One person, that is my father. चूँकि he wanted us to be someone जो कि खुद हम जिस पे प्राउड फील कर सकें, तो I would say. And for you, Nazifa? I have already told it. I think मेरे पे वो example fit बैठती है empowered women, empowering women. मेरी अम्मा जो है, she was a working woman all her life, and after retiring at 60, she is having a new job with my kids. So अगर वो obviously ना होती, so मैं कभी भी opt ना कर पाती अपना एक career, और कभी भी इसमें इतना excel ना कर पाती, बेफिक्री से 12-12 घंटे काम ना कर पाती. तो I am really thankful to her. And for you, Muskan? For me, my family is most important. उन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया और इसके इतने आगे बढ़ने की उन्होंने सपोर्ट किया है. वही मुझे सपोर्ट करती है मालूम है. It's not specified with my mother, father or my brothers. All of सबको them. खुश कर दिया इसने. और sassy बहन हमारे सामने आ गए हैं. Literally. So मैं Why don't you tell us that? हाँ, मैं थोड़ा स्पेसिफिक होती हूँ. मेरी कोई लंबी लिस्ट नहीं है. There are just 2 people. Still 2 people. ठीक है. Try to So make I it think fun. this is very similar to Nazifa. It's like the women in your family Yes. जो especially आपसे बड़े होते हैं वो आपके लिए एक example set करते हैं. So I think my mother set an example of me that how you can be brilliant at job, how you can be brilliant at home, how you can raise 2 kids by being a working woman, that too wonderfully. So I think it has been Mama, and I think Mama will watch the session as well. So I love you, Mom. और बहन भी देखेगी तो वो jealous ना हो जाए, so she as well. So I think that is it. And it has been wonderful talking to you guys. I think हमें बहुत कम Same here. टाइम मिलता है. ये अलग बात है कि वो हम ब्रेक वाला पूरा क्वेश्चन बोल रहे होते हैं. There is one thing that we have forgotten. Happy International Women's Day. Yes. So happy International Women's Day to all the people, all the women watching. अपने इर्द गिर्द whoever, whatever role that a woman is playing in your life, appreciate them. So happy International Women's Day to all the beautiful women out there. अपने आप को celebrate खुद करना सीखें. Don't wait कि कोई और आके आपको कहेगा कि you're doing a wonderful job. Today we are paying a tribute to you guys that you are doing a wonderful job out there in the world. Yes. So this is for you all. And thank you so much for tuning in, and we'll be back with more topics as well. Allah Hafiz. Allah Allah Hafiz. Hafiz.